वो 8 mm की छोटी सी फिल्म होती है, so like only a couple of minutes long, and then you project it on your screen, you know, it's your mental screen sometimes, you know, and you see those old videos. So when my father passed away, I opened that, you know, cupboard, and it was एक कबर्ड हमारी एक छोटी होती थी और एक कबर्ड थी पूरी कमरे में अलमारी की, वो दीवारों के अंदर जो बनी हुई होती है लकड़ी की, okay, and I saw inside there were termites. पुरानी लकड़ी की अलमारी बनी हुई है, उसके अंदर were termites, and we had all of this, you know, these leftovers from my father. Now I had to make an important decision at that time. I had to make an important decision. The decision was simply this. You know, I had to realize, number one, in order to love your father, your parents, your elders, you do not have to carry the garbage that they've left. Do you understand this? We have to realize that they are just as human, or were just as human as we are. They made their, you know, their share of mistakes. Masoom to nahi tera. Right? Okay. So we don't have to carry all the garbage that they've left. In fact, that would be stupid, you know, if we repeat the mistakes that our elders made. It is wiser, the more respectful thing would be that जो legacy जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है, हम उसको आगे बढ़ाएं. We move forward in life, right? It would be stupid if we repeat the same mistakes. कहने नहीं कि हमारे अब्बा का ये तरीका रहा है तो हम भी वैसे रहेंगे. Realize Abba was just another human being. You know, loving him, respecting him doesn't mean repeating his mistakes. Does that make sense? Okay. So I took all of that stuff, okay, and और वो जो अलमारी थी उसके लिए बुलाया मैंने फ्यूमिगेशन वाले साहब को. ही केम एंड सेड जस्ट लाइक इस पे तो फ्यूमिगेशन करनी पड़ी. उन्होंने आके सारा, you know, he started working on this, cleaning this thing up, okay, because I needed that space. So I was telling you about Richard Bandler and Milton Erickson. So Richard Bandler, John Brennan ने जब Milton Erickson को study किया, they found that Milton is, you know, artfully vague. He tells a lots of stories. He keeps telling stories and stories and stories, and they've noticed that he uses language in a very particular way, in an artfully vague way. And they wrote 2 more books, जिनका उन्होंने नाम रखा Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, Volume 1 and 2. अब ये जो 4 किताबें थी, Structure of Magic Volume 1 and 2, Patterns of Hypnotic Techniques of Milton Erickson, Volume 1 and 2. Richard Bandler, John Brennan thought, you know, and he said, Bandler says, since I'm a mathematician, I was like curious कि how come एक शख्स बिल्कुल precision की तरफ जा रहा है, एक शख्स total vagueness की तरफ जा रहा है, and they're producing identical results. There has to be some common denominator. There has to be some commonalities. Okay? How is it possible एक आदमी precision के ऊपर जा रहा हो, एक आदमी उधर दूसरी तरफ जा रहा हो, and they're getting same results? There has to be some commonalities. And they found there are many commonalities. और वो जो commonalities थी, they put them into a systematic model and they named it Neuro, Linguistic Programming. Okay, that's the historical perspective of NLP. Okay, so please come to your manual again, section 1. And go to page number 8. Conscious and unconscious mind. Now, let's quickly understand this before we move forward. Can someone read? I'll just quickly explain. Yes. Conscious and unconscious mind. Do you know you have a conscious mind that can hold 7 less or more 2 chunks of information? Okay, that's can hold 7 plus minus 2 chunks of information. Works. Now what does that mean? Basically हमारी जो consciousness है
It can hold 7 plus 2 or 7 minus 2. 7 plus 2 is 9 and 7 minus 2 is 5. So हमारे जो consciousness है इसके अंदर we can the data that an average person can hold, it's like say 5 to 9 bits of information. So for example, okay, बहुत सारे साबुन में market में मिलते हैं, हम use करते हैं. Can you name the soaps which are available? Cadbury, Lifebuoy, or yeah. Okay. 7 minus 4. Okay. That's an old information actually. Latest is 7 minus 4. For a trainer? Yes. Sir, every 15 seconds information changes. Okay. I have read in a book. Hold on. We'll have question answers later. Okay? Just let me go through this. Probably you'll get answers to your questions. Okay. Once I'm done with this section, then you can ask. I'll keep asking you if you have any question. Okay. Ask after that. So think about this. It's like गाड़ियाँ. किसको गाड़ियों का शौक है किसी को? Okay. कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है मार्केट में? Toyota अवेलेबल है, Honda अवेलेबल है, Suzuki अवेलेबल है, Prius अवेलेबल है और आजकल हाइब्रिड गाड़ी अवेलेबल है और इसके अलावा जीप्स अवेलेबल है और क्रूजर्स अवेलेबल है, उसमें निसान के अवेलेबल है, आजकल डीजल होंडा में अवेलेबल है और क्या नाम है पोर्श अवेलेबल है, आजकल लिमोजिन देख रहे हैं रोड पे. कल मैंने एक फिरारी देखी कराची में. Okay, so 7 plus. Okay, but if you notice this, what happens is, जैसे कंप्यूटर में RAM होती है, रैंडम एक्सेस. okay, random access memory. बिल्कुल उसी तरह हमारी जो consciousness, अगर हम बैठें, if we start counting, we may find actually 20-30 different cars. अब जैसे आपने कहा Prius Toyota की गाड़ी है. Okay, so when you say Toyota, it's like that Prius is included. Every other model of Toyota is included. Okay. So when you say Lexus, so it's like every model of that particular brand gets into that. What you will find is it's, an average person gets into 7 plus minus 2. That's how much conscious mind can hold. And what I'll be doing during these next 7 days is I'll be putting a lot of information in your consciousness. So at the end of the day, you're going to have this experience. Okay? You're going to experience confusion. You're going to experience frustration. Okay? You're going to experience a lot of other things inside. Okay? Not headaches. Okay? Everything directed in a positive direction. But when you're experiencing all of this is basically an expansion of your consciousness. What you will find at the end is you are able to hold a lot more information. Inshallah. Okay? It's like this. अगर first करो कि मैं अपने muscles को develop करना चाहता हूँ, अगर मैं रोजाना फर्ज करूँ कि मैं 1-1 किलो के डंबल से वो करता रहूँ, it will not have any effect. But if I want to grow, then I go from 8 to maybe 2 kg, and then maybe 3 kg, and then when I'm lifting, it gets, and when it gets really stretched, sore, that's when it is actually growing, right? So that's the kind of experience that you're going to have with your consciousness here. No pain, no gain. No, that's not a good belief to have. Okay? You will have a lot of fun and a lot of gain. Okay? Now, number 2. Yes, एक आदमी नहीं पढ़ना है साथ में, okay? दूसरे भी पढ़ेंगे. Yes. Work sequentially, step by step. Okay, so हमारा जो conscious mind है, ये sequentially काम करता है. अब हम मिसाल के तौर पे हम घर से निकलने का सबसे पहले हमें ये काम करना है, उसके बाद में फलाना काम, उसके बाद ये, उसके बाद ये. So we have this step by step thing. Conscious mind works that way. It needs sequence. It needs order. Okay. Then Thinks logically. conscious mind thinks logically. इंसान का जो जितनी भी logical, analytical thinking हो रही होती है, that's through his or her conscious mind. Okay. जी ध्यान पड़ेगा. Functions linearly. Functions linearly. Okay. Again, step by step. Okay. Yes. Ask why. Asks why. Conscious mind wants to know why. डर क्यों लगता है यार? तुम इतने जवान आदमी इतनी छोटी सी चिपकली से क्यों डरते हो? लोगों के सामने घबराहट क्यों होती है? It wants to know why. Curiosity. Okay. Analysis.
Analysis or curiosity? Whatever. Okay. Then Operates while you are awake. operates while you are awake. जिस वक्त हम शाम को घर जाते हैं यार बहुत थका हुआ ना, I need some rest and we sleep, तो हमारा जो conscious mind conscious functions जो हम कर रहे थे they just okay stops. जैसे आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालते हैं तो जो प्रोग्राम्स आप रन कर रहे थे वो वहीं के वहीं रह जाते हैं. Okay, then analyzes and attends to information. जो भी कुछ अभी like you're watching it on the screen, you're listening to all of this, okay? It is you're attending consciously to this information. Okay? Then जी आपने Has limited focus. has limited focus. हम consciously बहुत महदूद चीज़ों पे focus कर सकते हैं. यानी इस वक्त आप देखिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मेरी आवाज़ पर सुन रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें देख रहे हैं, but at the same time, you know, आपके इर्द-गिर्द कमरे का टेम्परेचर है, there are other sounds coming from outside. इस वक्त इस कमरे में AC चल रहा है, इस कमरे का AC की भी कुछ आवाज़ है, but you're not paying conscious attention to all of that. ठीक है? Then Domain of language. it's the domain of language. हम जो language बोलते हैं, consciously हमारे conscious mind के through हो रहे हैं सर. Like to be deliberate. Okay. Conscious mind is जितनी भी हमारी movements deliberate होती हैं, deliberately मैंने उसको उठाया, that's a conscious thing. Okay. Jiतना. Voluntary movements, Okay. aware of now. And conscious mind is operates, you know, is aware of now whatever is happening right now. Okay. Then Tries to understand the problem. tries to understand why I have this problem. Then Is outcome is oriented. outcome oriented. Focus is on the goal. Okay. Now, on the other hand, there's another part of you that's far more powerful. That's the boss inside. That is where all learning, all change takes place. I'm sorry. And that part of you is where the answer to why is. Where the conscious mind is asking why, unconscious mind knows why. Okay. Now let's see how your unconscious mind works. These are the basic functions of your unconscious mind. Okay. At some places, these are also called prime directives of the unconscious mind. These are the basic functions of the unconscious mind. You know, it's like it's the tip of the iceberg. Conscious mind is that tip of the iceberg, and then the rest of it is that unconscious. Okay. So there are a few things I want you to understand. Unconscious mind is responsive mind. It doesn't care whether something is real or not. It responds. Okay? It responds. It doesn't care whether something is real or not. Even if it is an imaginary thing or a real experience, the response is same. It doesn't follow rules of logic. कभी ऐसा हुआ है आपने कोई टीवी के ऊपर कोई फिल्म देखी, कोई ड्रामा देखा, कोई सॉन्ग सुना and you felt some emotions inside you? कोई एक्साइटिंग सीन देखा and you get excited? क्या उस वक्त आपने कभी कॉन्शियसली कहा अरे सब एक्टिंग हो रही है, ड्रामा है, इट्स लाइक एक्टर्स ने पैसे दिए? ओके, कभी ऐसा होता है? But what happens is we actually get involved in that. अच्छा, वो जो इमोशंस आते हैं, are they real or artificial? They're real. They're very genuine. We don't consciously bring those. It happens. Unconscious mind is a responsive mind. It doesn't care. It just responds. Okay? Now let's look at this. Your unconscious maintains your behavior. हमारे जितने behaviors होते हैं, so for example, do we ever do this कि यार अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:30 हो रहा है ना, मेरे ख्याल से 11:35 पे गुस्सा शुरू करते हैं, ठीक है, एंड 11:37 तक मेरे ख्याल से गुस्सा पीक पे लाएंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर, मेरे ख्याल से 39 पे उसको कम कर देंगे फिर. Do we ever do that? No.
Do we ever do that with positive emotions, positive things? यानी जो बच्चा आया उसने मुझे प्यार किया ना, अब मैं जब खुश होना शुरू होऊंगा मेरे ख्याल से बच्चे जब फुल सही पटाइट वाली पप्पी देगा ना बच्चा, फिर मैं सही खुश होऊंगा. उसके बाद फिर जब बच्चा थोड़ा सा साइड में जाके बैठेगा तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उस खुशी को कम करते चले जाऊंगा. Do we ever do that? No. These things happen automatically. Unconscious mind maintains all of those things. These are our unconscious automatic responses. They happen naturally to us. It seems natural. Okay? Then unconscious mind Does not process negative. does not process negative. So if I ask you, थोड़ी देर के लिए, okay, समंदर के बारे में मत सोचिएगा. बिल्कुल समंदर अपने ज़हन में तस्वीर भी मत कीजिएगा समंदर. और अगर समंदर का ख्याल आए तो समंदर पे ऊंट मत देखना. हरगिज़ भी ऊंट नहीं होना चाहिए समंदर पे. और अगर ऊंट हो, ऊंट के ऊपर बंदर नहीं बैठा हो. और अगर बंदर बैठा हो, बंदर के सर पे टोपी नहीं होनी चाहिए. और टोपी लाल नहीं हो, इस चीज का ख्याल रखना. ओके? और समंदर के हाथ में सेब नहीं होना चाहिए. Okay? Now what's happening? Not process नहीं कर रहा. We are just Okay? listening to the Because everything I am saying is actually coming in your mind. Why? Because nahi is not processed. Now think about this. If a person is saying, मैं चाहता हूँ परेशानी ना हो मुझे टेंशन नहीं हो. Okay? ज़हन को क्या suggestion जा रही है? tension हो. Okay? Similarly, first if we are working with a person or we are communicating with a person, ये देखो परेशान नहीं होना, टेंशन मत लेना. Okay? डरना नहीं, घबराना नहीं. Exactly. So नहीं जो है वो ज़हन में उसकी लाशों में process नहीं हो रहा. So उसके ज़हन में जो सारी suggestions जा रही हैं, they are all negative suggestions. So what you do instead is tell them what you want them to do. So rather than thinking about what you don't want to happen in your life, think about what you do want. Rather than thinking मैं बीमार ना पड़ूं, think मैं सेहतमंद रहूं. Rather than saying घबराना नहीं, डरना नहीं, relax रहना, confident रहना. Do you understand? Rather than saying कि मुझे financial problem नहीं हो, you know, I want to be financially free. You get this? Okay. Now, unconscious mind Organize your perception. organizes your perception. Now, माहिर नफ्सियात हमें ये बताते हैं कि इंसान के ज़हन को तकरीबन 200 million bits information जा रही होती है constantly. Like right now, while watching all of this, hearing all of this, there's so much information going to your brain. In addition to this, think about this. आपकी सांस इस वक्त चल रही है, आपकी पलकें झपक रही हैं, आपकी ज़बान तर है, आपकी आंखों के अंदर पानी आता है, तर रहते हैं जिसकी वजह से आपकी पलकें. आपके जो आपने खाना खाया हुआ है उसका डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, आपके खून की गर्दिश हो रही है, आपने जो खाना खाया उसमें से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, यू नो, हर चीज़ अपनी अपनी स्किन को अलग चीज़ की ज़रूरत है, हड्डियों को अलग चीज़ की ज़रूरत है, आंखों को अलग चीज़ की ज़रूरत है, एंड तमाम चीज़ें जो जा रही हैं, एंड ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड समवेयर इनसाइड यू. Okay? And we are not doing it consciously. So there's so much information going to the brain in apart from the information जो कि हमें external senses से आ रही है. So for example, when you're looking at me, you're listening to my voice and all the other sounds that are coming. Okay? So इंसान अगर इस सारी information को एक साथ process करने लगे, so वो पागल हो जाए. उस पागलपन से बचने के लिए कुछ बिल्ट इन प्रोसीजर्स, कुछ बिल्ट इन प्रोग्राम्स इंसान के जहन में चल रहे होते हैं, कुछ बिल्ट इन चीज़ें इंसान के जहन में हो रही होती हैं. उनमें से एक चीज़ ये है कि आने वाली इंफॉर्मेशन को इंसान कॉन्स्टेंटली डिस्टॉर्ट करता रहता है. सो प्रोसेस ऑफ डिस्टॉर्शन कीप्स ऑन हैपनिंग. फर्स्ट कीजिए, somebody walks in and asks you कि अभी तक क्या हुआ इसमें प्रोग्राम में. So every one of you will give a different answer. आप में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा होगा, आप अपनी तरफ से 100% सच बता रहे होंगे, still your answers will be different, right? Why? Because every person will have distorted in a. कभी ये देखा है टीवी के ऊपर जब कोई इवेंट होता है कहीं पे, और अगर if you see the same news live on different channels, it seems like a different news because her reporter वहीं पे खड़ा हुआ रिपोर्टिंग कर रहा होगा, but still उसकी information आपको लगेगा कि ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, because every reporter will be using and applying his own distortions, right?
दूसरा काम इंसान का जहन जो करता है, that is it deletes information. जो इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली आ रही है वो उसको डिलीट करता रहता है. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी फ्रेंड को कोई उसकी शादी पे कोई गिफ्ट दिया, ओके, लेट्स सपोज आपने उसको कोई पेंटिंग, कोई घड़ी उसको दिया. अब जब शादी के बाद उसके घर गए, उसने दावत करी, आप उसके घर गए, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? ओके, मेरी दी घड़ी की डंडा, राइट? ओके, it's like अगर आप एल्बम में if you're looking at a group photo, who do you see first? Yourself. You're looking at group photo in which you are also there. Who do you look at first? Okay, you delete everyone else, right? Now deletion is another process that happens. तीसरा process जो होता है, that is the process of generalization. Generalization क्या है? मिसाल के तौर पे आपने साइकिल चलाना सीखी एक साइकिल के ऊपर, then आपने तमाम साइकिल चला सकते हैं. आपने गाड़ी चलाना सीखी एक गाड़ी के ऊपर, now you can drive any car. Okay? हम एक process एक चीज करते हैं and then हम उसको so distortion, deletion, generalization, ये 3 processes हैं जो कि इंसान के जहन में constantly हो रहे होते हैं unconscious level पे. What about clusters? जैसे हम कोई भी इमेज देखते हैं तो उसमें we make a cluster, we make a complete picture, we don't pay selective attention to different objects. That is also processing in our brain. Exactly. That is a distorted image because two people having same experience at the same time will have a different clustered image inside their minds. Okay, based on their own distortion, deletion, and generalizations. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका सगा भाई, आपकी सगी बहन किसी इवेंट, बचपन के किसी इवेंट को याद कर रहे हैं और आप कहें क्यों फलानी जगह पे तो यूं हुआ था, ये वहाँ हुआ ही नहीं था, ये बात वहाँ की है ही नहीं, ये तो वहाँ हुआ था. आप कहें कि उसके अंदर वो फलाने साहब भी थे, वो था ही नहीं वहाँ पे, तुम्हें तो याद ही नहीं है कुछ. And you are sure that you're right and your brother or your sister is sure that she's right or he's right. होता है ऐसा कभी? How come? Because both of you have distorted, deleted, generalized different aspects of the same event. Selective attention. Exactly. Okay. Now, number 4, unconscious mind Takes everything personally. takes everything personally. This is why stories, metaphors work very effectively. So you may be working with a client, you may be working with a person, and while working, you are telling them stories. Now, I'll be sharing lots of my stories with you. But when I'm telling a story, now think of it. My objective is not to share my life with you. That's not the idea. Yet I'll be telling you lots of stories. Milton used to tell lots of stories. Because unconscious mind takes things personally. It applies things to self. Quran is filled with stories. Think about this. अगर surface level पे खाली सोचें कुरान में क्या है यार, पुराने ज़माने की stories है. आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा. अब just imagine this, आप travel करके दूसरे शहर से यहाँ आए हैं. यहाँ आने के बाद आपने घर पे फोन करके हाँ मैं पहुँच गया हूँ खैरियत से, right? Instantly आपने घर वालों को इत्तला कर दी, घर वाले सुकून में हाँ जी पहुँच गया बच्चा, right? ये हम इस ज़माने के लोग हैं. और उसमें अल्लाह ताला हमारे लिए सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा रख रहा है कि इब्राहीम, और कौन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी, उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को रेगिस्तान के अंदर छोड़कर आ गए अल्लाह के हुक्म पर, जिसका ये भी नहीं पता कि क्या होगा. ओके, और वो छोड़कर आ गए. उन्हें ये भी नहीं, बेगम ने कॉल करके कहा इब्राहीम खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, जरा कुछ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है. इसमें ज़करिया का किस्सा सुनाओ, इसमें मरियम का किस्सा सुनाओ, इसमें यूसुफ का किस्सा सुनाओ. इससे स्टोरीज. किताब किस चीज़ की? हिदायत की किताब है. किताब हिदायत की, full of stories. Does this make sense? Because stories shape personalities. Your story shapes your personality. Okay? We all have stories. Your own life is your story. Okay? Then unconscious mind
is what you are not aware of. is what you're not aware of. इसकी मिसाल एक इस तरह से फर्ज करो कि आप एक कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और जब आप कमरे में दाखिल हुए कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, आपके पास एक छोटी सी टॉर्च थी, आपने टॉर्च से जो चीज़ें देखी कुछ चीज़ें आपके सामने आई, तो जो चीज़ें आपके सामने आई ये आपके शऊर में आ गई और हर वो चीज़ जो कमरे में मौजूद थी लेकिन क्योंकि अंधेरा था तो आपको नजर नहीं आई, वो आपके अनकॉन्शियस में गई, लाशऊर. Okay, so conscious mind is what you're aware of, and everything else that is there, but you're not aware of, is your unconscious. Okay, then Uses and response to symbols. uses and response to symbol. ख्वाब, ख्वाब क्या होते हैं? These are symbols, right? आप ख्वाब में कभी देखते हैं कोई चीज़ एंड देन यू नो जब आप साइकोलॉजी में देखते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन आपको मिलती है, अगर आप रिलीजन में देखते हैं आपको ताबीर रोया का एक बहुत बड़ा इल्म पाया जाता है. यू नो दोस आर इंटरप्रिटेशंस. अल्लाह ताला ने ख्वाबों का जिक्र कुरान में भी फरमाया है. सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने बादशाह का ख्वाब, यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब, कि जेल में कैदियों का ख्वाब, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं. ओके, सो देयर आर सो मेनी, अल्लाह ताला ने ख्वाबों का जिक्र किया है. ख्वाब आर सिंबल्स, these are symbolic ways and it's ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन होती है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप अहादीस देखिए, उसके अंदर आपको कितनी जगह पे मिलते हैं ख्वाब. क्या आपने देखा मसलन आप उम्रा कर रहे हैं, ओके, सो ख्वाब जो होते हैं ये इसी तरह से हम जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे आपका कोई दोस्त है वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं यार देखो एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए. ओके, तो क्या वो टोकरी में अंडे रख रहा है? नहीं, मगर आपका मैसेज उसको पहुंच जाता है, बात आपकी समझ में आ जाती है, तो आपने सिंबॉलिक कम्युनिकेट किया, सिंबॉलिकली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके, सो unconscious mind understands and responds to symbols, to symbolic communication. Okay, then Works on the principle of least effort. works on the principle of least effort. कम से कम effort में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट. Okay, even if you look at your own life, this is what you will find. Okay, this is what every human being is trying. कि मुझे कम मेहनत करनी पड़े और मेरा रिजल्ट ज़्यादा, because it's an unconscious urge inside every person. Okay, जैसे हमारी instant gratification वाली भी जो चीज़ है, वो इसी चीज़ का I think इसी चीज़ का ही रिजल्ट है. We want कि कम मेहनत करें and ज़्यादा रिजल्ट मुझे मिले. Okay, we want more productivity with less effort. Okay, then Maintains instincts and generate habits. maintains instincts. कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप कहीं रास्ते में सुबह ऑफिस के लिए निकले and there is this voice inside you or there is this feeling inside you that tells you आज इस तरफ से मत जाना, and but somehow if you go there and you find अरे यार देखो मुझे था यहाँ से नहीं आना आज, but फिर भी मैं आ गया और देखो यहाँ ट्रैफिक जैम में फंस गया. Have you ever had that experience? Okay, that instinctive feeling and that voice or that vision that you may have comes through what? That from your unconscious mind. That gut feeling coming from your unconscious mind. That vision coming from your unconscious mind. That internal voice coming from your unconscious mind. So instinctively जो भी information आ रही है, it's your unconscious mind guiding you in a way. It really helps if you pay attention to those instinctive messages you're getting. You get stronger connection with your unconscious mind. Okay, then unconscious mind Needs repetition until a habit is installed. okay, unconscious mind needs repetition, 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 repetition until a habit is installed, until it becomes a natural thing for you. जिसे हम आज कहते हैं तो मेरा natural है. You were not born that way. Okay, everything that you feel is natural today was totally unnatural at some stage in your life. Serotonin reuptake करो. Anything, everything. हम अगर कोई फर्ज करो दूसरी ज़बान बोलते हैं, like आप जर्मनी में रह रहे हो तो वहाँ पे do you speak German? Yeah. Okay, so German आप बोलते हुए पैदा हुए थे? नहीं? You learned at some stage. जब शुरू में जर्मन अब आप like fluently बात कर लेते हो? मतलब बेसिक लेवल. Basic level पे आप कर लेते हो? Okay, is still are you going through that where you have to think or you just do it comfortably? I mean, it depends if it's about
everyday life, then I don't think. But if I have to talk about some new topic, then you have to think. yeah. Okay, so it's like everyday wali cheezein, because you've been repeating them so often, you don't have to think. It just unconscious mind is taken over. Yeah. Okay, it's become a natural, automatic thing. And like anything else, जब भी हम कोई चीज़ नई पहली बार करते हैं तो it seems unnatural. लेकिन जब हम उसे repeat करते रहते हैं, it seems natural. It becomes natural. Unconscious mind needs repetition. मैं इसकी एक मिसाल इस तरह से भी देता हूँ. अब में से अगर सारे के सारे नमाजी हो जाएं, सारे के सारे बड़े मुत्तकी परहेजगार हो जाएं, अल्लाह ताला की शान में कोई फ़ायदा और इजाफा हो जाएगा. और अगर सारी दुनिया के इंसान, सारे जिन्नात इंसान, सब के सब काफिर हो जाएं, तो अल्लाह ताला के उसमें कोई कमी आ जाएगी. तो फिर हमें 5 बार नमाज क्यों पढ़नी है? There has to be some logical explanation. उसको कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है. मुझे 5 बार नमाज का हुक्म दे दिया. सुबह उठ के मौलवी साहब अजान दे देते, चलो भाई आ जाओ. अभी दोपहर का खाना नहीं खाया था, चलो भाई इधर आ जाओ. ओके, अभी शाम की चाय नहीं है तो चल भाई इधर आ जा. अभी एक नमाज पढ़ गया तो दोनों इधर, भाई वापस इधर आओ, मगरिब बोल के. ओके, अभी रात का खाना बेगम ने नहीं सेट किया था, वो मौलवी साहब ने चल भाई रात की यार हद हो गई. 5 बार दिन में, चलिए एक दिन छुट्टी भी दे देते हफ्ते में, नहीं 7 days a week, 365 days a year, okay, or 352 days a year, but you have to do it. What for? Who needs it? You do. I do. Unconscious mind needs repetition. This is why I say practicing NLP is not something like हमने तो जी मैंने 2 दिन NLP भी ट्राई करके देख लिया, मैंने ट्रेनिंग भी करी थी NLP की, मैंने वीडियो भी ली थी, उसको भी देखा, पर मैंने उसको, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ. आपने इस्तेमाल किया था? नहीं, मगर वीडियो तो ली थी ना. Okay, it will not do anything if you do not use what you are learning here. You have to use this. You have to apply this. Okay, then next. Protects you in the best way unconscious. Protects you in the best way your unconscious. Your unconscious mind wants to protect you. Your unconscious mind is your friend, is benevolent. Now this means कोई भी ऐसी, for example, later you are going to learn hypnosis in this course. So there is nothing, if somebody by hypnotizing someone tries to give them something negative, harmful, their unconscious mind will protect them. The person will not carry it out. Richard Bandler की किताब है, and उसके अंदर he cites one of his experiences. It's something like this. There was this person who had this. You came to Richard Bandler, he said कि जी मैं फलाना एक ब्रिज है और उसके पास मेरे बार-बार ज़हन नहीं आता है कि मैं उस ब्रिज से मैं जंप कर जाऊँ. But he never did it. Never did it. बट एक दिमाग के अंदर ख्याल जो उसको कई बार आता है. तो रिचर्ड बैंडलर कहता है कि उसको जब उसने हिप्नोटाइज किया और उससे उसने पूछा अनकॉन्शियस लेवल पे, व्हाट ही फाउंड वाज कि ये शख्स जो है कभी ऑपरेशन इसका कुछ हुआ था, एनेस्थीसिया में था, एंड ही वाज लाइक इन एनेस्थीसिया इज लाइक अ डीप हिप्नोटिक स्टेट. ओके, एंड ही इज इन दैट स्टेट, एंड वहाँ खड़े हुए 2 डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे. ओके, सो एक डॉक्टर ने कमेंट किया कि इफ ही सर्वाइव्स something of that sort, मुझे exact अल्फाज याद नहीं, but it was something like कि अगर इसने बच गया तो ऐसे कि जैसे फलाने ब्रिज से इसने छलांग मार दी. Okay, now what तमसीलन, unconscious mind takes things personally, unconscious mind understands, responds to symbols. Okay, and जब उसने कहा कि ये बच गया तो इसने छलांग मार दी, और वो एक्चुअली ऑपरेशन के बाद बच गया. Okay, so unconscious के ऊपर वो suggestion उसके अंदर, but he never did it. Suggestion was there, the thought was there, the idea was there, but he never operated, he never acted on it. Unconscious mind protects the person. Okay? Then